आज पढ़िबा जे हमें गैमेटोजेनेसिस है ना। सो गैमेटोजेनेसिस रे हमें स्पर्माटोजेनेसिस आज पढ़िबा। तो लास्ट क्लास हमें डिस्कशन करथिले कोन जे हमर मामारी ग्लैंड डिस्कशन करथिले आ किछ तो क्वेश्चन कर गैमेटोजेनेसिस का जो टोटल स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के माने फॉर्मेशन ऑफ गैस के सब में ये लाजिक पड़ना। तो अच्छा, तो गैमेटोजेनेसिस से मैं देखता मेल जल्दी डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म पर होते स्पर्मेटोजेनेसिस और इन केस ऑफ फीमेल मेरे हमें ओवम को बोलते हैं हमें oogenesis है ना। ये जो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट कहती है ना GnRH FSH LH okay follicle stimulating polydenizing these regulates the gametogenesis beside the hormone but it would also regulate for the gametogenesis besides that besides this hormone vitamin E is also responsible for the gametogenesis. Okay, so deficiency of vitamin E leads to the sterility, right? So vitamin E ର ଅଭାବରେ କଣ ହବ ନା sterility ହବ। କିନ୍ତୁ vitamin A जो vitamin A is required for the formation of healthy cells. So vitamin E is the necessary element for the spermatogenesis and vitamin A is also required for the formation of the healthy. Okay. So gametogenesis ता हम divide करते तीनटा स्टेज स्पेसिफिक तीनटा स्टेज है। गोटे कहउछे हम मल्टीप्लिकेशन स्टेज, सेकंड स्टेज को हम कहउछे ग्रोथ स्टेज और थर्ड स्टेज को कहउछे हम मैच्योरिटी। बुझिया ना। सो मेल को हमें कहउछे स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल डेवलपमेंट को हमें कहउछे oogenesis और फॉर्मेशन ऑफ गैमेट जेते बेले हमें डिस्कशन करबा ताले सेथिरे किछटा हार्मोन हमको हेल्प करूची गैमेटोजेनेसिस करिया पई लाइक GnRH FSH and LH। Besides hormone हमको कोन दरकार ना vitamin E is responsible for that and vitamin A is also required for the healthy sperms। Okay, so तीनटा स्टेज रे हम याको डिवाइड करूचे मल्टीप्लिकेशन स्टेज, ग्रोथ स्टेज और मैच्योरेशन स्टेज। सो मल्टीप्लिकेशन स्टेज रे कोन होउची और ग्रोथ स्टेज रे कोन होउची और मैच्योरेशन स्टेज रे कोन होउची हम एबे डिस्कस करबा। सो एक टिकी इंट्रोडक्शन नहीं जिबा। As there are two types of gametes, the spermatozoa and ova, the gametogenesis can be studied under two broad headings called as spermatogenesis and oogenesis। माने development of gamete can be development of a male gamete or development of female gamete। So male gamete to development को हम कहउछे spermatogenesis और development of female gamete को हम कहउछे oogenesis। So spermatogenesis, spermatocytogenesis and spermiogenesis यार डिफरेंस मु कहिबी जते बेला हमें टोटल स्टेज तक पढ़ी सारिबा हला। So there are a bit confusion in between these terms, so I will clarify it later। Okay, so spermato जेटु फर्स्ट लाइन कहउची as there are two types of gametes, spermatozoa and ova माने जेतु हमें गैमेट डेवलपमेंट पढुचे केमिति गैमेट एक्चुअली फॉर्म होउची तो सेठी हमें मेल गैमेट भी देखिबा और फीमेल गैमेट भी देखिबा। सो मेल गैमेट रो डेवलपमेंट को हम कहउचे स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल गैमेट रो डेवलपमेंट को हम कहउचे oogenesis। Then कहउचे spermatogenesis is the formation of a spermatozoa whereas oogenesis is the formation of a ova। So both spermatozoa माने ova originate from primordial germ cell or PGC। जनरली पीजीसी रो फुल फॉर्म होची प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स हैला। ए जो पीजीसी होची ए पीजीसी ता एक्चुअली हमें कोन जेते बेल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट रे ओरिजिनेट हुए फर्स्ट 3 डेज भीतर ये ओरिजिनेट हो जाए और तापरे जनरली डेवलपमेंट हो जाए तापरे एक्सटर्नल जेनेटिलिया पाखु को जाए सॉरी एक्सटर्नल नो जेनेटिलिया स्ट्रक्चर पाखु को जाए एवं सेथि हमर डेवलपमेंट ऑफ स्पर्मेटोगोनियम हुए। तो हम देखिबा ओके नेक्स्ट स्लाइड रे देखिबा। You can recall that spermatogenesis occurs in the seminiferous tubules। आमे त seminiferous tubule रो हिस्टोलॉजी पढी थिले सेठी कोन थिला गोटे स्पर्म एमती गोटे स्ट्रक्चर न थिला देखलो एमती गोटे स्ट्रक्चर न थिला ए जो छोटो स्ट्रक्चर तापर गोटे बड़ स्ट्रक्चर छोटो स्ट्रक्चर तापर गोटे बड़ स्ट्रक्चर एमती थिला ना नहीं देखिथिला ना नहीं ये जो तीनटा एमती थिला
सो एटा सेल गुडा को कहूचे सॉरी सेल गुडा कहूचे हमें स्पर्माटोगोनियम ओके सो you can recall that spermatogenesis occurs in the seminiferous tubule of testis and oogenesis occurs in the follicles of the ovary. So formation of gametes starts at the puberty. The puberty हुए सेतेबेले हमर जाके formation of gametes start हुए हला एई जाके क्लियर अछि तापरे हमें डिस्कशन करिबा मते खाली मेसेज करि दियो माने इनलाइन मेसेज रे करि दियो कि क्लियर so that we can go to the further how exactly the division multiplication phase growth phase और maturation phase केमती हुए ए जाके क्लियर अछो आई थिंक मो वॉइस समस्त को आसुथबो तो क्लियर अछो समस्त I am seeing only one message. If you are present in this this video means the class in also then at least message karo otherwise okay fine okay so next slide को जीवा एटा होची जो हम कहइतली प्रिमोडियल जर्म सेल रो केमिति हमर को मूवमेंट केमति होची हला ओके जो यक्सक पाखरे हमें देखि परचे एटी प्रिमोडियल जर्म सेल अछि ओके ए जर्म सेल कोडा को एम्ब्रियोनिक स्टेज जते बळे बाहरी जाय सेते बळे एटा को स्टार्ट हो जाय मूवमेंट so primordial germ cells are the specialized population of embryonic cells that are the precursor to gamete okay so gamete ro precursor को हमें primordial cell generally कहू okay they arise early in the development and migrate to the development gonads so जेहेतु एटा gonads भीतर न थाए तो gonad बाहर थाए सेटा को हमें सेहित में हमें कहू एटा गोटे एक्स्ट्रा एटी जो स्ट्रक्चर एटा पढिले which is extra gonadal origin right यार गोनाड से तो कि संपर्क नहीं मतलब बाहर थांती एवं देन डेवलप माइग्रेट होंती सो इट सेट में तो कोचे ये जो पीजीसी ता गोटे एक्स्ट्रा गोनाडल ओके एक्स्ट्रा गोनाडल एलिमेंट एटा हला सो डेवलपिंग गोनाड टेस्टिस और ओवरीज where they ultimately differentiate into sperms and eggs एटा ही ultimately differentiate एटा स्पर्माटोगोनियम देन सेमिनिफरस ट्यूबुला देन ए सेमिनिफर जो स्पर्माटोगोनियम ता देन डिवाइड होची in case of a male. So PGC then embark on a journey migrating from their site of origin to the development gonads. In mammals, the migration often involves the traversing the hindgut and reaching the genital ridges. Okay. So eta migrate है कि जाए हमारे genital ridges में. तो यार origin is not in the gonad, so इसी पे हमें तो कहूँचे extra gonadial in origin. So हमें next division पढ़िबा. First एटा कौन ए जो स्ट्रक्चर ता कहइतले जो स्पर्माटोगोनियम ओके फाइन एटा हला सब प्रथम आसला कोन ना प्रिमोडियल जर्म सेल रु जेतल माइग्रेट हेकी गला मेल पाकु हम त कहउचे कोन स्पर्माटोगोनियम ए स्पर्माटोगोनियम when it reaches the puberty male or female it reaches the puberty ये कोन करे ना एटी कोन होय ना हमर हाइपोथैलेमस एक्टिव हे एटा हाइपोथैलेमस एक्टिव हेबो एटी कोन जीएनआरएस हार्मोन रिलीज करिवो ए जीएनआरएन हार्मोन्स कोन करबो ना एंटीरियर पिट्यूटरी को कोन करबो हमरो सिग्नलाइज करबो कि एफएसएच और एलएच रिलीज करिया पे स्टिमुलेट करिया पे तो एई एफएसएच और एलएच कला एफएसएच ता कोन करबो स्टिमुलेट करबो सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करबो तुम जानि छ आउ एलएच कोन करबो लीडिक सेल को स्टिमुलेट करबो हला सर्टोली सेल कोन करबो जे कोन कहइतिल तुमको पढितले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सर्टोली सेल कोन करबो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करबो लीडिक सेल कोन करबो ना टेस्टोस्टेरोन करबो टेस्टोस्टेरोन कोन करबो ना जोटा स्पर्माटोजेनेसिस रे हेल्प करबो स्पर्म टेस्टोस्टेरोन को सेमिनिफरस ट्यूबुल को आनिबो किए ना एबीपी हार्मोन एबीपी प्रोटीन कोन ना एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बुझि परलो जते बेले प्यूबर्टी आसला सेठी कोन हला ना ये हाइपोथैलेमस ता एक्टिव हला हाइपोथैलेमस एक्टिव हला परे एथिरे जीएनआरएस हार्मोन रिलीज हला कोटिक रिलीज है ना एंटीरियर पिट्यूटरी को ए एंटीरियर पिट्यूटरी तापर कोन कला ना एफएसएच और एलएच को
रिलीज कला ए एफएसएस कहा को स्टिमुलेट कला ना सर्टोली सेल को स्टिमुलेट कला जोटा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करिवो इनिविन प्रोवाइड करिवो ऐसा नो सो देन लीडिक सेल कौन कला ए जो एलएच ल्यूटिनेजिंग हार्मोन टा कौन कला ना लीडिक सेल टा को कौन स्टिमुलेट कला सेट्रो कौन बाहला ना एंड्रोजन टा कौन ना टेस्टोस्टेरोन ए टेस्टोस्टेरोन काम कौन ना स्पर्मोजेनेसिस टा को कौन स्पर्माटोजेनेसिस टा को कौन करिवो हमरो प्रोसेस करिवो बुझी पारलो देन ए पीजीसी स्पर्माटोगोनियम हैला स्पर्माटोगोनियम रा हमरे माइटोसिस देखले हला एटी माइटोसिस कोटा हैला ना कौन ना स्पर्माटोगोनियम आ स्पर्माटोगोनियम दीटा माने जनरली इट इक्वेशनल डिवीजन ना ऐसे नो स्पर्माटोजेन 2n टा एटी सेट पॉइंट 8 आउची 2n एठी के आसला भी 2n एठी के आसला भी 2n बुझियला ए जो स्पर्माटोगोनियम हम काहे कि दीटा तो सेम स्पर्माटोजेनियम वाला मैं कि टाइप ए काहे कि देले और टाइप बी काहे कि देले तमे देखितो जो मेंडलिज्म जेतले करो गोटे सेल को नेकी करो यस सर नो तार साइज इंक्रीज हुए जनरली हां ना सो एठी गोटा करो हमें साइज इंक्रीज करिचे आ गोटा सा पुनी सेमती एठी देखो स्पर्माटोगोनियम एरी स्पर्माटोगोनियम वाला एटा को हमें कहले हमें तमे टाइप एक्स करो टाइप वाई करो एटा को टाइप ए करो एटा को टाइप बी करो दैट इज नो इट्स अप टू यू ओके मु एटा करिछि जे टाइप एटा को टाइप ए नै छै एटा को टाइप बी नै छै इट्स अप टू यू हाउ यू कैन डू इट ओके फाइन एठी जो स्पर्माटोगोनियम हला ए जो टाइप एटा हला एठी टाइप बी टा हम साइज इंक्रीज करछे ताको हम कहउछे प्राइमरी स्पर्माटोसाइट जेटु टाइप साइज इंक्रीज करछे से पे हम कहउछे ताको ग्रोथ फेज हला एठी के आसे बर्तमान टाइप ए रे कोन होछ ए जो टाइप ए रे सेमती ए स्पर्माटोगोनियम रो भी कोन माइटोसिस हबो स्पर्माटोगोनियम रे माइटोसिस हबो एरा सेमती पुनी अगेन दीटा स्पर्माटोगोनियम बनेबो से टाइप ए टाइप बी गोटा कर साइज इंक्रीज हो गोटा माइटोसिस करबो एमते क्लियर एमते कंटीन्यूअसली एटा लाइफ लॉन्ग चलती बुझी पालो ना नहीं ये जगह रे मते को प्रथमे स्पर्माटोगोनियम टा माइटोसिस कला गोटे ए टाइप ए गोटे टाइप बी गोटे ए जो टाइप ए टाइप बी मु करी छी एटा इट्स अप टू यू ओके तमे तो टाइप एक्स करो टाइप वाई करो टाइप कोन तम हिसाब रे तमे जोटा करो टाइप 1 करो टाइप 2 करो ए जो बट गोटा कर साइज इंक्रीज करबो आ गोटे माइटोसिस करबो बुझी परछ तो ए गोटे कर साइज इंक्रीज करले हम तो को ग्रोथ फेज सेमती सेकंड तर ए जो स्पर्माटोगोनियम टाइप बी करथिले ए सॉरी टाइप ए करथिले ए टाइप ए रो कोन अगेन माइटोसिस एटा भी माइटोसिस होची एटा भी माइटोसिस हो बुझी परलो ए जेतले माइटोसिस हो ई कोन ई पुनी स्पर्माटोगोनियम क्रिएट करबो एटी अगेन एटी टाइप एटा टाइप ए दियो एटा कोन टाइप बी दियो हला ए टाइप बी टा पुनी साइज इंक्रीज करके पुनी चलला ए टाइप ए टा पुनी माइटोसिस कला पुनी स्पर्माटोगोनियम ए टाइप ए एन टाइप बी then type B is going under the size increase type A is going under the mitosis empty lifelong ए प्रोसेस ता चले हला बुझेला ते स्पर्माटोजेनेसिस जे ए बटन टाइप बी को आसो जब साइज इंक्रीज कला तमे दा कोचे ग्रोथ फेज हला फाइन आ ए जो एटी जो हमर कोन ए जो माइटोसिस हला एटो का हम कोचे मल्टीप्लिकेशन फेज हला बुझेला सो हम जेटु मल्टीप्लाई करले स्पर्माटोगोनियम एटु मल्टीप्लिकेशन ए जो जेटु साइज इंक्रीज करले एठी हम कोन करे एटाको ग्रोथ फेज कहै तापर कोन बाहरला हम ना प्राइमरी स्पर्माटोसाइट जोटा 2n अगेन एटा 2n थिला सॉरी ए जो एटा 2n थिला एटा भी 2n आसिला एटा भी 2n आसिला पुनी एटा एते बेले कोन हला ग्रोथ ए जो प्राइमरी स्पर्माटोसाइट टाइप बी को हम कहउचे एटा कोन करले एटा भी 2n हला अच्छा एटा को जे देखियो हम कोन ए स्पर्माटोगोनियम टा कोन 44 प्लस x प्लस y 44 टा कोन ए x प्लस y टा कोन ये 44 और x प्लस y ए सेक्स क्रोमोसोम आउ कोन ए जो क्रोमोसोम नंबर टा हला 44 46 टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 सेटरे 44 प्लस हां सो हां 44 प्लस ये x प्लस y हला जेटु एटा मेल तो हम बखरे कोन xy अछि हला अच्छा सो 44 प्लस x प्लस y सो एटा जते बेले एठी के आसिला टाइप ए टाइप बी एटा भी से 44 प्लस x प्लस y एठी अछि एठी भी से 44 प्लस x प्लस y अछि हला एटा टिके मन रखुता ए जो ये गुडा को माने नंबर गुडा को हला देन प्राइमरी स्पर्माटोसाइट आज इट इज 2n एटा भी से 44 प्लस x प्लस y नाउ एठी कोन हबो ना हम एठी हम मियोसिस करू छ मियोसिस 1 माने मियोसिस हम जानि छ दीटा व्हाट फर्स्ट आउट रिडक्शनल डिवीजन सेकंड आउट इक्वेशनल डिवीजन मियोसिस 1 इज गोइंग अंडर द रिडक्शनल डिवीजन तो इन रिडक्शन डिवीजन हला कोन ना जे प्राइमरी स्पर्माटोसाइट हमें
दीटा बाहर हे गेला कोन ना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और एटा भी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हला ए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट रो एठी कोन हला ना एटा कोन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एन हे गेला एठी 2n थिला मियोसिस हला एन हे गेला हला देन तमे जानि छ मियोसिस 2n नो फर्स्ट हुए n आउ n देन ए n ता कोन हुए एठी कोन हे जाय हमरो तापरे इक्वेशनल डिवीजन हे जाय तो एठी जो डिवीजन हला एठी कोन हला गोटे पटको आसला 22 प्लस x एपटको आसला 22 प्लस y हैला एटा को हम कहउछे सेकेंडरी एटा n एटा भी n बुझि पारलो देन तापर मियोसिस 2 हला सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जेते मियोसिस 2 करूचे हम कोन बाहर करछे ना स्पर्मेटिड होचे ए स्पर्मेटिड ता कोन n एठी 22 प्लस x एटा भी 22 प्लस x सेइ पे हम कलर अलग करछे हला एटा ए स्पर्मेटिड ता जो 22 प्लस y थिला एटा भी सेइ n एटा भी n एठी कोन 22 प्लस y आसिला एठी भी 22 प्लस y आसिला ए स्पर्मेटिड रो जेन डेवलपमेंट है कि हम कोन बाहर करछे ना स्पर्म बाहर होचे एटा भी सेइ n एठी कोन 22 प्लस x अछि एठी 22 प्लस x एठी 22 प्लस y प्लस 22 प्लस y हला এই প্রসেসটাকে আমি কইছে স্পারমিওজেনেসিস এই যে প্রাইমারি স্পারমাটোসাইট রু এই প্রাইমারি স্পারমাটোসাইট রু টিল স্পার্ম র ডেভেলপমেন্ট যাকে এইটাকু কোনতে আমি ম্যাচুরেশন ফেজ আর এইটা হচ্ছে আমরা লংগেস্ট ফেজ হলা এইটা ফার্স্ট ফেজ এইটা মাল্টিপ্লিকেশন ফেজ ওটি আমরা মাইটোসিস হচ্ছে স্পারমাটোগোনিয়াম র দেন স্পারমাটোগোনিয়াস র সাইজ ইনক্রিজ হচ্ছে এটাকে আমি কইছে গ্রোথ ফেজ দেন এই প্রাইমারি স্পারমাটোসাইট হলা जोटा हमरो 2n44 प्लस x प्लस y देन सेठु हमरो कोन होची ना स्पर्मेटिड और स्पर्म होची एटा को होची हमें कोचे मैचुरेशन फेज एटा होची हमरो लॉन्गेस्ट फेज हला बुझी हला सो जनरली ए जो स्पर्म ता हम कोन वाला गोटे 22x जदी गला कारण फीमेल जान जो सब बेले x ही आसीबो 22 प्लस x जदी आसीला x आसीला ताले एटा फीमेल हला जदी y आसीला एटा मेल हला बुझी हला एति की ना उथरे लेख कहबे देखो पीजीसी प्रिमोडियल जर्म सेल थिला जोटा हमरो माइग्रेट हे के आसीला जेनेटल रिच पकको एठी कोन हला ना एठी सेमिनिफोर जेतबे डेवलपमेंट हला प्यूबर्टी आसीला सेमिनिफोरस ट्यूबुल कंप्लीटली डेवलप हला इट स्पर्मेटोगोनियम हला इज द प्यूबर्टी कोन हला ना हाइपोथैलेमस सेतल एक्टिव हला जीएनआरएच रिलीज कला जीएनआरएच का को सिग्नल देला एंटीरियर पिट्यूटरी को कोन रिलीज करिया पई ना एफएसएच और एलएस रिलीज करिया पई ए एफएसएच ता कोन करूची ना स्टिमुलेट करची सर्टोली सेल को जोटा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करची स्पर्म को এই जो एलएस ता का कला ना लिडिक सेल को स्टिमुलेट कला कोन बार कला ना एंड्रोजन बार को बा टेस्टोस्टेरोन बार कला ए टेस्टोस्टेरोन ता कोठी यूज होची सॉरी ए टेस्टोस्टेरोन ता कोठी यूज होची ना हमरो स्पर्मेटोजेनेसिस से देन आसला स्पर्मेटोगोनियम रो माइटोसिस हला माइटोसिस रो कोन आसला स्पर्मेटोगोनियम रो माइटोसिस स्पर्मेटोगोनियम हला एटो हम गोटे को कोचे टाइप ए गोटे को टाइप बी गोटे साइज इंक्रीज करूची आ अगेन आ गोटे माइटोसिस रे जाउची एटा भी सेम कंटीन्यूअस फेज रे चालुची देन ए जो टाइप बी रो साइज इंक्रीज करते हम तो कोचे ग्रोथ फेज एटी कोन आसले ना एटा भी 2n थला स्पर्मेटोगोनियम 2n ए जो हम टाइप बी देखले सेटा भी 2n प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी 2n देन ए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट रे साइज इंक्रीज हे सला पर हम एटा को मियोसिस 1 भीतर जाउचे हला बा हम कहू जे ताको रिडक्शनल डिवीजन ओके ए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होची सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 22 80 डिवीजन हो जाउची x और y रो सो देन 22x और 22y तापरे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट रो देन कोन इक्वेशनल डिवीजन जते बेले होची हम फॉर्मेटेड होची एटी भी 22x एटी भी 22y देन स्पर्म डेवलप अच्छा एरा मन रखो एई जो हमरो स्पर्मा जो एठू कोन स्पर्मेटोगोनियम पीजीसी रू ओके स्पर्मेटोगोनियम रू एई जाके स्पर्मेटिड जाके हला स्पर्मेटोगोनियम रू स्पर्मेटिड जाके एई प्रोसेस टा कोन हम स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस हला आउ स्पर्मेटिड रू स्पर्म को हमें कहउछे स्पर्मियोजेनेसिस हला सर स्पर्मियोजेनेसिस ताले स्पर्मेटोजेनेसिस ता कोन ना स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस प्लस स्पर्मियोजेनेसिस हला तो एठी आसो
एटा तार जोटा हम जनरली गूगल ले कि कोनोसी जगह रे हम सर्च करियो एटा मिल जिवो स्पर्माटोगोनियम हैला एटा माइटोसिस हैला डॉटर सेल टाइप ए स्पर्माटोगोनियम डॉटर सेल टाइप बी स्पर्माटोगोनियम एटा पुनी अगेन डिवीजन हैला देन एटा कोन ना डॉटर सेल टाइप बी स्पर्माटोगोनियम जेते बेले हमर साइज इंक्रीज करन एटा को प्राइमरी स्पर्माटोसाइट कहूचे ई प्राइमरी स्पर्माटोसाइट कोन ना डिवीजन हैला मियोसिस 1 हैला दीटा सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट बाहरले दीटा सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट अगेन कोन इक्वेशनल डिवीजन मियोसिस 2 रे गले तब चारिटा स्पर्माटेड बाहर कले आ चारिटा स्पर्माटेड तो चारटा स्पर्म सेल बाहरला से कथा कहिछि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्माटेड फ्रॉम स्पर्माटोगोनियम is called as spermatocytogenesis हैला a formation of sperm from the spermatid is called as the spermiogenesis so कौन ना spermatogenesis ता कौन ना spermatocytogenesis plus spermiogenesis बुझि परला ए जाय के क्लियर अछि वर्तमान आगु को पढिबा गोटे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म पढिबा ए जाय के क्लियर अछि क्लियर तो ही जाएंगे ना किसी यही जगह रे किसी डाउट अछि ओके फाइन अच्छा एटा होची हमरो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म हैला ए जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म रे कोन हुए हम जानि छ हाइपोथैलेमस कोन मैंने जस्ट कहली जे जते बेले प्यूबर्टी हे जाय जते जीएनआरएच रिलीज करे जीएनआरएच एंटीरियर पिट्यूटरी को कोई एफएसएच आउ एलएस रिलीज करिया पय अच्छा एफएसएच ता कोन करे ना सटोली सेल ले काम करे आ एलएस ता कोठी काम करे लीडिक सेल ले काम करे ये होना नै तो एटा कोन हुए ना जते बेले एक्सेस स्पर्माटोजेनेसिस हुए हला जते बेले ये नेगेटिव फीडबैक दिए एंटीरियर पिट्यूटरी को कि बंद करबा पय माने एफएसएच रो रिलीज को कम करबा पय इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ एनएफएस मु तम कहितली जते बेले जो इनिबिन कथा कहितली जते बेले कहितली जे इट इनहिबिट द कोन एफएसएस को इनहिबिट करे और इनहिबिट कोन करे ना इनहिबिट जो रिलीज ऑफ एफएसएस को रिलीज करे सेठी कहितली एटा गोटे ग्लाइकोप्रोटीन एटा गोटे होना नै ए ग्लाइकोप्रोटीन ता कोन करे ना ई जो एफएसएस रिलीज को कम माने इनहिबिट कर दिए सो इनहिबिट कर दे मेल ले कहितली इनहिबिन आ फीमेल ले कहितली कोन ग्रैन्युलोजार सेल ऐसा न सो कोन हुए ए जो हाइपोथैलेमस रु एंटीरियर पिट्यूटरी जीएनआरएच रो एक्टिवेशन ने कोन एलएच और एफएसएस एटा सटोली सेल कोन करूची ना एबीपी कहितले ने कोन ना एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन एटा लिटिक सेल कोन करूची ना स्टिमुलेट करूची कोन टेस्टोस्टेरोन हला अच्छा ए टेस्टोस्टेरोन टा को आणुची के ना एबीपी कोठे ना सेमिनिफरस ट्यूबुल ले तापर कोन होची ना हमर कोन ए जो स्पर्माटोजेनेसिस प्रोसेस ता स्टार्ट होची जदि एक्सेस स्पर्माटोजेनेसिस हला तले जो इनिबिन कोन करिवो ना ए नेगेटिव फीडबैक दबो का एंटीरियर जनरली स्पेसिफिकली एंटीरियर पिट्यूटरी को ही दिए हला किछिटा बोले तुम देखिबो जे हाइपोथैलेमस को देता है हला से हाइपोथैलेमस को देले भी जीएनआरएच रो हार्मोन कोन टिके कम रिलीज हो देन एंटीरियर पिट्यूटरी भी आल्सो इनहिबिट करिवो बट भलो बहिरे देखिबो जनरली एंटीरियर पिट्यूटरी को ही सिग्नल दिए तो टू इनहिबिट द रिलीज ऑफ एफएसएच हला इनहिबिन एटा करे सेमती ए टेस्टोस्टेरोन कोन करे सेमती टेस्टोस्टेरोन कोन करे एठी बोथ को दिया हाइपोथैलेमस को दिए एंटीरियर पिट्यूटरी को भी दिए ना ए जो रिलीज ऑफ एलएच को कम करबा तो सो दैट जो एक्सेस स्पर्माटोजेनेसिस को हमें रोकी पारे सो ए जो कंसंट्रेट ऑफ एबीपी कोन ना कंसंट्रेट टेस्टोस्टेरोन इन 70 पर ए कंसंट्रेशन ता ये करे और रेट ऑफ स्पर्माटोजेनेसिस को इंक्रीज करे एबीपी कोन एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन आ सुनो ए जो टेस्टोस्टेरोन ए मु तो कहियो को भूली जाइतरी ना टेस्टोस्टेरोन किछि जगह रे जो माने जते बेले एम्ब्रियोनिक स्टेज रे थाए पिलाटी हला माने जो फोटस्ती सेते बेले कोन होय ना ए टेस्टोस्टेरोन किछि मात्रा रिलीज हुए केते बेले रिलीज हुए ना लास्ट ट्राइमेस्टर रे हला हमें जो प्रेगनेंसी को हमें ट्राइमेस्टर रे डिवाइड करछे लास्ट ट्राइमेस्टर रे हमरो कोन होय ना some amount of testosterone in a very low concentration plasma रे रिलीज हुए that is 30 mg per ml हला ए जो रिलीज हुए कोन करे ना एटा ही डिसेंड करे टेस्टिस को स्क्रोटम को हला एतले हमर जो स्क्रोटम रो डेवलपमेंट स्क्रोटम एटा कहि नथली जे टेस्टोस्टेरोन टा ही सीक्रेट करे जे फोटल स्टेज रे वेरी लो कंसंट्रेशन है जोटा हेल्प करे कि डिसेंट ऑफ टेस्टिस इनटू स्क्रोटल से
ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ତମକୁ କହିନଥିଲି କାଲି ଯେତେବେଳେ ମାମାରି ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ପଢଉଥିଲି ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହିଥିଲେ ନା ଯେତେବେଳେ ମାମାରି ଗ୍ଲାଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଥିଲା ଆମର କ'ଣ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋଲାକ୍ଟିନ୍ ପିଆରଏଲ ହରମୋନ ଥିଲା ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ପିଆରଏଲ ହରମୋନ ଅପ୍ ଟୁ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ମିଲ୍କ ଫର୍ମେସନ ହୁଏନି ନା ନାଇଁ ଅପ୍ ଟୁ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ପରେ ଯାଇକି ଆମର କ'ଣ ମିଲ୍କ ଫର୍ମେସନ ହୁଏ ଏ ପିଆରଏଲ ହରମୋନ को किए प्रोलैक्टिन हार्मोन को किए से इनहिबिट करके रखता है माने हमर कोन माने पीआरएल हार्मोन को सप्रेस करके किए रखता है ना डोपामाइन हार्मोन रखता है हला हला फाइन आ ये जो डोपामाइन दा हेता ये जो डोपामाइन दा बट इन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन कोन करता है सप्रेस कर रखता है देन कोन हुए जेतेबेले स्टार्ट हे गला हमर माने जेतेबेले प्रोलैक्टिन स्टार्ट हे गला मिल्क सिंथेसिस स्टार्ट हला बेबी रिलीज हे साला परे हला ସେଇଥିପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଲାଗେ ଗୋଟେ ରୁ 2 ଦିନ ଲାଗେ ରିଲିଜ ଅଫ ମାନେ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିଲ୍କ ଫର୍ମେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଏ ମାନେ ଛୁଆ ସକ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଯାଏ କିଛି ଜାଗାରେ ହୁଏନି ହେଲା so it takes times okay to means when generally it is सब it's all about the कोन କହିଥିଲି ତମକୁ formation of milk secretion of milk is about the neuroendocrine कोन neuroendocrine activity okay reflex ହେଲା तो जेतेबेले शॉक करवा स्टार्ट करे छुआ जेतेबेले निजे को निजे शॉक करवा स्टार्ट करे सेतेबेले जाय कि माने एक्सेस फॉर्मेशन ऑफ मिल्क हुए हैला तो सेठी कोन हुए ना ए जो जेतेबेले प्रेगनेंसी टाइम रे कोन करे ना किए सप्रेस करूची प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन आ नॉर्मली अप टू प्रेगनेंसी डोपामाइन हे को सप्रेस करके रखुची एटा कहि नथि तम एते डीपली पढिबोनी बट फिर भी जानबा पय हैला किछि भी एक्सपेक्टेड हे पारे तो एटा होची नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म अबाउट ऑफ हाइपोथैलेमस केमिति इनिबे माने एक्सेस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्माटोजेनेसिस हुए ताले केमिति इनिबिन आउ टेस्टोस्टेरोन एंटीरियर पिट्यूटरी को नेगेटिव फीडबैक सिग्नल दियंती सो दैट टू डिक्रीज द कोन सिक्रेशन ऑफ एफएसएच एंड एलएच तो एटी हमें टिके हमर कोन ये को पढी दबा एनसीईआरटी कोन कहूची सो दैट वी विल बी क्लियर so primary sex organ the testes in the case of a male and the ovaries in the female produce gametes sperms and ovum respectively by the process called as the gametogenesis that I have discussed in testes the immature male germ cell spermatogonia produce sperms by spermatogenesis that begin at the puberty the spermatogonium or the spermatogonia okay fine singular helle spermatogonium hobo present on the inside wall of a seminiferous tubule multiply by mitotic division and increase in the numbers increase number so each spermatogonia in diploid contains 46 chromosomes जोटा कहइथिली 44 plus x plus y some of the spermatogonia called as the primary spermatocyte and rest कहइथिली केमती mitosis करबो size increase करबो periodically undergo meiosis हला primary spermatocyte periodically undergo meiosis the primary spermatocyte complete the first meiotic division means reduction division that is meiosis 1 leading to formation of a two equal haploid cells called as the secondary spermatocyte कहइथिल ना dita secondary spermatocyte होछ हला dita secondary spermatocyte then equational division ने जाई कोन हम spermatid बनाउछ which have only 23 chromosomes each the secondary spermatocyte undergo second meiotic division to produce the equal and haploid spermatids that is equational division so what would be the number of a chromosome in the spermatid okay what is spermatid रे chromosome number केता हबो 22 okay so 22 plus x plus y it's 22 plus x or 22 plus y okay so the spermatids are transferred into the spermatozoa sperms by the process of spermiogenesis after spermiogenesis sperm heads become embedded in the Sertoli cells and are finally released from the seminiferous tubule by the process called as the spermiation release process को हम कहते हैं sperm the spermatogenesis starts at the age of puberty due to the significant increase of secret of a gonadotropin releasing hormone GnRH okay this is you recall is a hypothalamic hormone eta ote hypothalamic hormone the increased level of GnRH then act as the anterior pituitary koithili gland so stimulates the secretion of two gonadotropins kono na luteinizing hormone or follicle stimulating hormone FSH LH act as a leading cell and stimulate synthesis of secretion of androgen androgen in turn stimulate the process of spermatogenesis androgen mana it is testosterone kotha कहूछ FSH act at the Sertoli cell and stimulates FSH ର काम कोन ना nutrition provide करबा
है ना. Secretion of some factor which help in the process of a spermatogenesis. Let us example the structure of a sperm. So next class time देखिए the structure of sperms and कौन ना oogenesis केमती होच. Okay, fine. କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଯଦି ପଚାର. ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇଠି କହିଛି ଏଇଟା ବୋଧେ ହଁ ଏଇଟା schematic representation of spermatogenesis. ये देखो at puberty mitosis differentiation ହେଲା primary spermatocyte, then first meiotic division, secondary spermatocyte, then equital division spermatid, then differentiation ହେଇକି ଆମ କଣ ହେଲା spermatozoa. ଏଇଠି chromosome number 46 spermatogonia ରେ ବା spermatogonium ରେ, then primary spermatocyte ବି ସେଇଆ 46 then secondary 23 ଏଠି ବି କଣ 23 ହେଲା ବୁଝିଗଲା. Then lateral menstrual cycle and all the things. I think all clear. We'll end the class. Is it out of the